अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माइकल और हम लोग निकले हुए हैं एक मुलाकात के सिलसिले में। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुछ मुफीद रिज़ल्ट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन इस सफ़र के दरमियान में माइकल के कुछ सवालात थे, वो मुझसे पूछना चाहते थे। मैंने सोचा चलो उसको रिकॉर्ड कर दूँ। सो माइकल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? I want to ask, in Islam, after some couple get divorced, can they meet another partner, another husband or wife? That is my question. Okay. Michael, Yeah. Islamic divorce system is if one male and female, they are husband and wife, Yeah. and if they are fighting, they have they have mismatching, they are not understanding to each other. In that situation and condition, Islam is allowed them. They can take divorce and they can get separate, so no problem. But after separation, female, she can marry with other male, it's allowed, and male also can marry with other female and can live peaceful life, it's allowed. But for female in Islam is small duration after marriage. She should be wait for 3 menses, monthly periods. Yeah, wait 3 months. Why 3 months? If she pregnant with old husband, so any kids will born like baby girl, baby boy. So this baby boy and baby girl, we can call them with old husband name, old father name. They was father. So after 3 months it will be clear she is not pregnant, she got 3 menses. Do you understand my I answer? understand. We almost right. माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, माइकल के सवाल का जवाब समझ में आ गया। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत करते करते माशाल्लाह बहुत से इश्कालात सफ़र के दरमियान में दूर हो रहे हैं। हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।